Thank you so much, sir, for the introduction. Uh, okay. Can I share the screen? So my PPT is visible. Sir, if there is any network issue, then just let me know. Okay, sir. Okay, sir. So, I am Jyoti, research scholar from Panjab University, University Business School Department. So, today we are going to understand and learn the topic about balancing duty and family, and the family and supervisor connection. That how the family and supervisor impact on the employer employee life, and how they are important to balancing duty and the family. So, as we are starting this lecture with the data, that with the there is a famous Annie, who is the researcher who said that how we spend our days is, of course, how we spend our lives. So, for many of us, a large portion of our days is spent at work. In fact, the average person will spend 90,000 hours at work over the lifetime. It means that one third of your life is spent at work. So, as per the report of EDP Research Institute, shows that 76% of Indian workers believe that stress negatively affect their performance at the work. So, stress is the main reason behind the poor performance of employees. So, while 49% of employees say that stress affect their mental health negatively, so, meanwhile, there have been a global decline in the number of workers who feel supported by their managers or the supervisor regarding their mental health at the work. So, in India, this dropped from 80% to 71% in the same period of 2023, as per the report of ADP. Next, the 60% of Indian workers think that their managers do not have the necessary abilities to have meaningful conversations about the mental health. So, as we are looking that there is a 76% of Indian workers who feel that stress negatively impact their performance, and as well as their supervisor or the managers do not have the ability to understand the impact, or they can't help them, or they are willingly or unwillingly not helping the employees to manage their mental health. So, as organizational support in focus, there are multiple authors who state that there is a advantages or importance or positive side of support. That if the organization is supporting their employees, then there is a positive side, positive results. As that organization support help employees to develop and grow in their performance, which also strengthen their loyalty with the workplace. So, as in 2012, the researchers said that organization support can induce a significantly positive influence on the overall the work environment. And as the organization support can notably influence employees' performance positively, it can be said that organizational support
can make a positively significant impact on the performance and can help the organization to enhance other employees outcome as well as in the long term. So that is clear that organization support have a positive impact on the all over the life or on the employees outcome, and it ultimately impact on the objectives achievement of the organization. So here is the two aspect that for the balancing of work and family life, there is main importance of organization support and family support. So as per the authors, family support may also play a resource role by providing love and expectations to motivate employees, specifically those from communal societies, to work harder at their jobs. So, the skills and perspectives that young workers develop at home regarding how to maintain a good relationship with family members may also help them to have a better relationship with supervisors and the co workers, and the vice versa. It is clear that the family support is main as well as the organization support. If the worker or the young worker, we can say that, learn how to behave, how to speak, how to respect their elders in the family, then they it may ultimately help them to better employ in the organization, to build a better relationship with their superior, with the supervisor, with the co-workers. So, as per the Park et al. 2004, emotional attention and support from others offers solutions to the issues. So, if there is any conflict in the work and at the family life, and there is any negative impact or the stress in the life of the employee, then in such case, emotional attention and support from the family or the social group, from the friends, from the co-worker, from the supervisor, help the help the employees to overcome the conflicts. In conclusion, fostering emotional attention and support from others offer multiple solutions to the variety of issues. It create a positive, inclusive environment that contribute to the overall success and as well as the well-being of individuals and teams. So there is the two main aspect of every working individual, that the importance of family and the demand of work, and employees have to balance in both of the aspects, that the domain of family domain and the work domain. It is important to balance between these two areas is crucial for the overall well-being of the employees, as neglecting one aspect is in favor of the other can lead to the stress, strained relationship, and a diminished quality of life of the employees of the organization as well. Achieving work and family life balance requires conscious efforts, effective time management, and a commitment to maintain one's physical and mental health. For it is clearly stated that for maintaining a physical as well as psychological health, there should be a balance between the family life and the work life. So employees should manage both of them equally. There is a demand of work, that the work is the integral part of our life, as we can understand, that providing not just financial stability in our life but also a sense of purpose and accomplishment in our life. But the requirements of our job can sometimes affect our personal lives, upsetting the balance needed for the peaceful and happy life. Long working hours, for example, tight deadlines, and pressure to excel can lead to the stress, exhaustion, posing a threat to our overall well-being. So there is a multiple type of demands of a work from the employee. So employee has to balance, like long working hours, if there is a long working hours, tight deadlines, pressure to excel, or achievement of the objectives at the timely basis. So employee has to be try to manage the pressure of the work, so demand of the work, and another side the importance of family has to be managed. So the importance of family, if we talk about the family, on the other hand, serve as a pillar of support, love, and stability in our life.
It is within the family unit that we find comfort, loving relationship, and create lasting memories. Neglecting family responsibilities in the employee life can result in strained relationships, emotional disconnections. Thus, finding a balance between work and family life is not just about managing time. It is also about taking care of relationships that are most important to us. So the balance between the both of the domains, both of the areas is important. The first area is family, the importance of family, and second one is the demand of work. So if anyone, any individual who is working is failed to create a balance between the both domains, work and family, then it will result the work family conflict in their life. So work family conflict is a negative aspect in the life, so it causes multiple issues. The some of these are health issues, low commitment with the organization, poor management in the organization, stress and burnout, absentees, number of absentees will increase ultimately if the conflict is there in the work and family life, low productivity of employees, turnover, strained relationship. So work related stress can lead to the depression, which has strong correlation with the work disability and low quality of life. So, if there is a disbalance between work and family life, it ultimately causes multiple issues in the life, and it also invite the low quality of life and work disability. So, here is the work family life and stress, then it ultimately causes the poor performance. There are multiple reasons. So here is the tensions between family and work roles can lead to decrements in the psychological and the physical well-being of workers. As per the multiple researchers, it is stated that if there is a disbalance between family and work roles, it can ultimately negatively impact their physical or psychological well-being of the workers. So balancing work and family domain are one of the crucial aspect of everybody's life. Uh, some common reasons behind stress among employees are heavy workload, uncomfortable or unsafe physical working conditions in the organization, lack of recognition or reward from the employer to the employee, conflict and interpersonal issues with the family conflict, we can say, ineffective or unsupportive management, job insecurity among employees can also lead to the stress, lack of work life balance, as we understand, pressure to meet deadlines. There are multiple reasons. Some of the common reasons are these. So, how we can, as a working woman, working man, how we can minimize the work family conflict? There are some of the examples that social support from the friends, support from the family members can help us to minimize the conflict between the both domains. Flexible time schedule and child care centers also can help the working woman. For example, working woman, if working women have option of child care center, then she can work freely without any tension, then it can ultimately minimize their work family conflict. Family supportive work environment, formulation of family friendly policies and open communication system is also helpful for minimizing work family conflict. So, as per the Jan and Qureshi 2002 research, here is they stated some of the issues that they are interrelated and it ultimately impact on the employee's quality of life. So, the quality of life is generally understood as the degree to which an individual is healthy, comfortable, and able to participate or enjoy life events. So we can say that if employee is enjoying his life, his or her life is healthy and comfortable with the family or work, then we can say that
his life quality is good. So the as per the model, as per the interpretive structural modeling model of factors affecting the quality of life, the author stated that there is a multiple issues, like fair there's a multiple elements that affect the quality of life, like fair compensation, work overload ultimately impact on the job satisfaction. Their workplace safety also matters. Job stress, it also impact on the physical health of the worker. Daily activities, if there is a stress, then daily activities ultimately impacted. Like if there is a stress, then activities are like quality of goods decrease, performance of the employees decrease, so the mental health is also negatively impacted. So these all items, these all factors are intercorrelated and impacted on the quality of life of the employees. So if we talk about the importance, that why we have to create a balance, why we are going to think about the equilibrium between the work and family life. So why there is a need of achieving work and family life balance? There is a multiple reasons. Some of these are reduce stress. If as we are working and our family life is satisfied, work life is satisfied, both are balanced, then we can say that we are stressless person. That it can ultimately reduce the stress and burn out and promoting better mental health, and it create a focused mindset among the employees. Spending good time together and connecting emotionally make family bond stronger, and improves professional relationships as individual become more present and engaged at work. Enhance job satisfaction of employees, which ultimately conclude the supported environment in the organization. Boost morale and productivity of employees, reduce the risk of health issues related to stress and overwork, promote overall well-being, leading to the healthier and more fulfilling life. So there are multiple reasons that why we are going to balance, why we have to balance our life, why we have to create equilibrium between our family domain and work domain. So there are topic that doing things differently, sharing responsibilities and being flexible, going beyond traditional gender roles. So there are multiple factors that affecting the distribution of responsibilities within a gender. That there is a male is working and female is working, then what are the factors which are affecting their distribution of responsibilities? The first is traditional gender roles. As per the traditional gender roles, there are some historical expectations that traditionally societal expectations have often assigned women the primarily responsibility for caregiving and managing household tasks. That woman is only meant for the household task, for childcare. And another side, men have traditionally been associated with a role of breadwinner, focusing more on career and financial responsibilities. And as per the traditional gender role, there is a division of labor as per the gender, that a woman might traditionally take a large share of responsibilities related to the child care, cooking, and housekeeping. And other side, as per the traditional gender role, there is a man may bear more responsibility for financial provisions and tasks requiring physical strength. Another is evaluating dynamics. After the traditional gender role, there is a evaluating changing dynamics that shift towards equality. So modern societal trends are moving towards a more equitable distribution of responsibilities between genders. Many couples are challenging traditional roles with both partners actively
participating in both work as well as family duties. There is a dual career concept also is introduced, like dual career couples. With the increase of dual career couples, both men and women often share responsibilities for earning income and managing household tasks. So couples may need to negotiate and communicate effectively to find a balance that suits both partners' profession as well as personal life. Next is the shared responsibilities between both men and women. So work life integration is most important aspect, that both men and women are increasingly recognizing the importance of work life balance nowadays. So and seeking ways to integrate professional as well as personal responsibilities. Next is the parental roles. So, shared parenting is becoming more relevant or prevalent in now in this scenario, with both fathers and mothers actively involved in childcare and upbringing, not as a traditional role that a woman only made for the childcare or housekeeping. There is a new concept that parental role can be shared by the both father and mother. Shared responsibilities, as we know the concept. The fathers are increasingly taking and on caregiving responsibilities, challenging traditional norms as. Next, flexible work arrangements are also introduced that both men and women benefit from and contribute to the adoption of flexible work arrangement such as remote work and flexible schedules. Support system, support from the extended family, friends, employer can significantly influence the individual ability to balance the work and the family responsibilities. There are some of the challenges, or we can say that there are issues for the equilibrium between the family and work life between male and female. Like there is a societal expectations from the men as well as from the women. So the societal expectations and cultural norms can still influence individuals perceptions of their roles, impacting their choice regarding work and family responsibilities. This is a challenge for the women as well as men who are working, who both are working for their families. Next, career implications. Women may face challenges related to the career advancement, balancing expectations related to the family responsibilities. And another side, the men might encounter societal expectations that prioritize career success over active involvement in the family life. So there are some individual differences as well as that personal choices, individual performances, preferences, and choices play a crucial role in determining how responsibilities are divided within the family. That men and female, how they divide the responsibilities between them. Factors such as personal values, career aspirations, a family dynamics contribute to the decision making process of the division of the work or responsibilities among them. And the communication and collaboration is also main aspect, that open communication, if there is an open communication and collaboration between the men and women who are working, are essential for navigating and negotiating the distribution of responsibilities effectively. If wife is working, husband is working, but there is no communication, there is a poor communication between them, and division of work is not very well, then they can't work, where they can't manage their work effectively, their personal and professional life. So the open communication is must, and collaboration and the personal choices, they have to understand each other and they have to communicate as well. While historical gender role have influenced perception of work and family responsibilities, as well as there is a growing trend towards shared responsibilities and greater flexibility in the work. The shift towards more equitable arrangements requires ongoing efforts at both the societal and individual level to challenge and overcome traditional expectations of as per according to the gender.
So ultimately the goal is to create environment where individuals regardless of gender can pursue fulfilling careers and meaningful family lives. So there is a topic like the creating a positive work environment strategies for enhancing employees well-being. So what are the factors that affect or promote the creating positive work environment among employees? There are multiple societies. Organizations play a crucial role in enhancing the work life of employees. Here are several strategies that organization can adopt to enhance their employees' work life. So, if we talk about the both domains, work and family domain, so there is the responsibility of the organization to use some strategies which can promote or enhance their employees' work life. So, basically, first one is flexible work arrangements. So, flexible work arrangement covered the remote work options like offering the flexibility of work remotely, either on permanent or occasionally basis, can help employees achieve better work-life balance. And flexible hours, like organization can allow their employees to set flexible work hours, which can individually promote their performance and personal responsibilities they can fulfill as per their choice. So the remote work options and flexible hours can helpful for the employees to manage their work life balance. So next one is wellness program. So organization need to implement the wellness programs like health and fitness initiatives, like implementing wellness program, fitness challenges for the employees, providing gym facilities can contribute to employees physical as well as psychological needs. Next is the mental health support. Organization should need to offer counseling services, stress management workshops and mental health resources, which can help to address the psychological aspects of work life of employees. So organization needs to focus on wellness programs. Next is professional development opportunities. So the training and skill development also can help to balance the work domain and family domain of the employees. So investing in employees' professional growth through training program and skill development opportunities can enhance the job satisfaction among employees. And career advancement paths, like clearly defining career path to the employees and providing opportunities for advancement within the organization can motivate them to excel their performance. Next is recognition and rewards. If there is recognition, then employees can feel motivated ultimately. Employees recognition programs like acknowledging and rewarding employees for their contribution help to the employees to positively impact their work environment. Competitive compensation, offering competitive salaries to the employees and benefits demonstrate the organization's commitment to valuing its employees. Next one is clear communication. Transparent communication, keeping employees informed about the organizational goals, any about changes and decision, uh, and trust and sense of inclusion, like all these are depend on the communication. If there is communication, if a organization is willing to inform their employees about the organization goals, then ultimately employees can try it or fulfill the organization goals if they are known, if they are informed that what is the objective, what is our short term objective, what is our long term objective. If organization inform openly or clearly to the employees, then employees ultimately work on it. Open door policy, encouraging open door communication between employees and management, allows for timely resolution of issues and concern. If there is feedback system, we can say that if there is a feedback system, open door policy, then employees can freely talk about the issues with the employer.
Next is work life balance initiatives. So, first one is paid time off and vacation policies. Providing sufficient paid time off and flexible vacations policies allow employees to recharge and spend quality time with family. Encouraging breaks, organization needs to promote the importance of taking breaks during the workday can prevent burnout and enhance their productivity. Technology and infrastructure. So up to date technology, ensuring employees have access to modern and sufficient tools and technology can also help the workplace as well as it reduce the stress of employees. Supportive infrastructure, providing a comfortable and well equipped work environment to the employees can uplift their productivity as well as can manage their stress level and promote job satisfaction. Next, inclusive and diverse culture. It also helps the employees to balance their work life. As diversity and inclusion program fostering a diverse and inclusive workplace promote a sense of belonging among employees. Another is equal opportunity practices for every employee without any discrimination. The implementing fair and equal opportunity practices ensure that all employees feel valued and appreciated. Next, the employee assistance program. Organization need to offer employees assistance program that provide counseling, financial advice, and support during challenging time can contribute to the overall well-being of employees. The last one is if there is a team building events in the organization, then it also can help the employees to manage their stress level or work family conflict. So organization team building activities and societal events foster positive relationship among employees, and they can freely communicate also. If there is a good relationship between employees, they can freely communicate about the issues, about the difficulties of managing work life and family life. uh, Recognition personal and professional milestones. Celebrating milestone is also the positive point that can supportive work environment. So by incorporating these strategies, organizations can create an environment that values and support its employees, ultimately contributing to a healthier and more fulfilling work life. So, employee satisfaction and well-being in turn positively impact organization's success and productivity. So, if employees are happy, so organization can achieve its objective easily within the time frame. So there are multiple aspects we learn that if organization is using team building events, diversity and inclusive programs, equal participation practices, counseling, support services, paid time off, vacation policies, encouraging breaks, up to date technology, supportive infrastructure if is there. So employees can ultimately be feel free and satisfy, and their good psychological health can be promoted by the organization. So next one is family support, a key to work life balance success. As we learn about the supervisor organizational support, that what is the organization support and why, how organization can promote the balance between their employees work life. So there is another aspect is family support. So how family support can help the employees. So families play a crucial role in supporting their working members to achieve a balance between their work and family life. So hence are some ways in which families can contribute to and enhance this equilibrium. So if we are going to learn that how families can
play an important role in balancing. So if there is two domains, family domain and work domain, there is not equilibrium. Like if family is not supportive, there is a poor communication between member who is working and the family member who are not working, then they can't survive, they can't communicate, they can't balance their life. So there should be a open communication. So family support, if they are not supportive to the working member, then working member performance is ultimately negatively impacted. So the family support is must. So there are some ways that how families can contribute and to enhance the performance of the employees. So open communication, first one is, so with the open communication, open and we can say honest communication about work schedule and commitment and stressor, working member can successfully balance their work and family life. So create a supportive environment where family members feel comfortable sharing their work related challenges and success. Next, shared responsibilities. Establish a system for sharing household responsibilities, including childcare duties. Like if woman is working, then men have to understand that his wife is working, so he has to participate in responsibilities like childcare responsibilities. Collaborate on creating a family schedule that accommodate everyone's commitment and allow the quality time together. So they are open, there must be a open communication and shared responsibilities. Next one is respect for boundaries. So show consideration for the time you spend with family by not talking about work when it is our family time. So keep work and the personal time separate. Helping working members establish a dedicated workspace at home to reinform the separation between work and family life. Quality family time, prioritize and schedule quality family time regularly basis. Encourage, engage in meaningful activities that promote bonding and strengthen family connections. Flexible adaptability. So be flexible and adaptable to changes in work schedule or unexpected work demand. And important one is support each other during busy period and find ways. Sure, sir. Sure, sir. तो ओके, तो यहाँ पे हम मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट है, तो यहाँ पे फैमिली सपोर्ट का होना भी जरूरी है एक एम्प्लॉय की लाइफ में, सो दैट ही कैन मैनेज देयर वर्क एज वेल एज फैमिली लाइफ. सो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमें फैमिली मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कि हर किसी को सपोर्ट करें. जैसे उनकी फैमिली में उनका हेड है जो वर्किंग है, उनकी मदर वर्किंग है, तो बच्चों को सपोर्टिव होना चाहिए कि वो कैसे काम करें, अच्छे से उनको कम्युनिकेट करें आपस में, सो दैट एक दूसरे की कन्फ्लिक्ट, अगर फैमिली का हेड कोई काम कर रहा है, उसको कोई वर्कलोड है, वर्क स्ट्रेस है, तो वो जो घर जाके अपनी फैमिली के साथ ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि वो घर जाके बात कर सके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कि मुझे ये स्ट्रेस है, और फैमिली मेंबर्स भी आगे से सपोर्टिव होने चाहिए सो दैट वो उसको लिसन, सुने और आगे से उसको कुछ आउटपुट दे कि तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कि कुछ आप ऐसा स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हो, उनको मींस उनको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए कि वो अच्छे से रिलैक्सिंग फील करे और मैनेज कर सके अपनी दोनों लाइफ्स को. सो सपोर्ट ईच अदर ड्यूरिंग बिजी पीरियड एंड फाइंड वेज टू मेक अप द लॉस्ट time together is most important for both domains. Uh, Next is encourage self care. So sufficient rest or break, activities that bring joy in the life should promoted by the working employee in his family life, and family members also support. अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, वर्किंग है, बट वो हमेशा काम पे ही रहता है, कभी छुट्टी नहीं लेता, कोई ब्रेक नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है, तो वो अपनी फैमिली को सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगा, तो फैमिली भी आगे से उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगी. तो there should be a sufficient break or rest, or there should be activities that bring joy in their life.
so they can understand each other. uh, Acknowledgement of importance of managing physical and mental well-being is also important, that they can understand that what is the importance of mental health in our life. Shared goal setting, so collaboratively set and prioritize family goals. So ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिव है बट उनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, बिकॉज देयर will be a imbalance between their both domains. But अगर शेयर्ड गोल सेटिंग मीन्स वो कोलेबोरेटिवली काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के भी उनके पास कुछ गोल्स हैं, कुछ काम है, वो अपनी फैमिली के टुवर्ड्स भी अपनी ड्यूटी समझ रहा है, अपनी फैमिली के टुवर्ड्स भी काम कर रहा है, अपनी हमारी फैमिली के क्या गोल्स हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, फैमिली मेंबर्स की पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स भी उनको अंडरस्टैंड करेंगे और इन रिटर्न फैमिली मेंबर्स भी उनकी हेल्प करेंगे। उनके अगर कोई भी उनका इशू आता है, उनका इमरजेंसी में हॉलीडे वाले दिन को काम पे जाना पड़ता है, तो फैमिली मेंबर्स भी अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को। सो सेलिब्रेट अचीवमेंट्स, यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड ऑन हो रहा है कि अगर कोई भी फैमिली मेंबर अगर कोई भी अचीवमेंट कर रहा है, तो उसकी अचीवमेंट को अगर क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर कोई भी अचीवमेंट है उनकी, तो यहाँ पे क्या होगा, उनके बीच में एक अच्छा इन्वायरमेंट बिल्ड होगा, जिससे वो अपने आप को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारे बीच में अगर कोई अचीव कर रहा है तो उसके पॉजिटिव साइड हमारे लिए भी है। तो यहाँ पे अगर फैमिली ऐसी है कि जो आपकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर रही है, तो आप हैप्पी फील करोगे, काम पे भी और घर पे भी। फाइनेंशियल प्लानिंग, वर्क टुगेदर, तो फैमिली मेंबर्स हैं जो भी उनकी मनी के रिलेटेड हैं, जो भी स्ट्रेस है उनको, जो भी बजट है, बजट प्रिपेयर करना है, जो भी काम करना है, उसके रिलेटेड भी दोनों की फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए फैमिली मेंबर्स के साथ। तो यहाँ पे अगर एक ही वर्किंग पर्सन है, वो ही अर्न कर रहा है, बाकी सारे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं उस पैसे को, तो यहाँ पे क्या होगा, उनमें कंफ्लिक्ट अराइज होंगे। अगर फैमिली में कंफ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली उसकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी इम्पैक्ट डालेगा। तो यहाँ पे देयर शुड बी अ financial planning which can reduce the stress about budgets and spending. Emotional support, तो हमें इमोशनल सपोर्ट भी हमारी फैमिली मेंबर से भी हम देख सकते हैं, फ्रेंड्स से, फैमिली मेंबर्स हैं, सो ऑफर इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम एट वर्क, प्रोवाइड अ लिसनिंग, लाइक हम अपने फैमिली मेंबर्स में अगर किसी को भी जो वर्किंग है उसको कोई इशू आ रहा है, तो उसको एनकरेज करें। फैमिली में अगर फैमिली सपोर्ट है उस बंदे के पास, तो वो उसके फैमिली मेंबर्स उसको सपोर्ट करेंगे, उसकी जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको सुनेंगे। तो यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द वर्किंग एम्प्लॉयज। टेक्नोलॉजी बाउंड्रीज, अगर छुट्टी पे हैं तो जो भी वर्किंग एम्प्लॉयज हैं उनको भी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी का यूज कम करें, अपने जो वर्किंग आवर्स हैं वो वर्किंग आवर्स में ही अपने काम को खत्म करें, ना कि उसको लॉन्ग लास्टिंग घर तक लेके आए। सो यहाँ पे है align individual appreciations with collective work objectives. Education and understanding. So educate family members, is it is also important to the working employees that they have to educate their family members. Like family members को भी पता होना चाहिए कि उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसकी भी कुछ डिमांड्स हैं उनसे, और जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी क्यों जरूरी है। अगर उनको ये चीजों का पता होगा तो वो हेल्प करेंगे अपने जो भी फैमिली मेंबर्स है, जो वर्किंग फैमिली मेंबर्स हैं, उनको बैलेंस करने के लिए, उनको लिसन करेंगे, उनको सुनेंगे, उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। So mutual understanding between the family members or other family members who are not working and working family members is also important. By implementing these strategies, families can actively contribute to creating a supportive and balanced atmosphere for their working members, ultimately enhancing the overall well-being of the entire family unit. So if there is these all aspects, that like open communication between family members and working family members, shared responsibilities, respect for boundaries, quality time, flexible adaptability, self care, shared goal system, celebrate achievement, these all things are if there, then they ultimately enhance well being in their family life also. Next,
डोमेन इज सुपरवाइजर सपोर्ट। जैसे हमने अभी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट का इम्पोर्टेंस पढ़ा है कि हर एक, अगर कोई भी वर्किंग एम्प्लॉय है, वर्किंग इंडिविजुअल है, उसकी लाइफ में अगर ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट है तो उस पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसी तरह से अगर उसका दूसरा डोमेन है उसका फैमिली लाइफ, फैमिली सपोर्ट, अगर फैमिली भी सपोर्टिव है तो बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्टफुल हम बोल सकते हैं। तो अनदर साइड इज सुपरवाइजर, जिसके अंडर पर्सन एक्चुअल में एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका सुपरवाइजर कैसा है, उसके सुपरवाइजर का बिहेवियर कैसा है, उसका सुपरवाइजर उसको सुनता है, उसका फीडबैक लेता है कि नहीं लेता। तो ये सारी चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं। जैसे सुपरवाइजर सपोर्ट हेल्प वर्कर्स बाय गिविंग इंफॉर्मेशन दैट रिड्यूस देयर वरीज रिगार्डिंग परसीव्ड अनसर्टेनिटीज। जैसे किसी भी एम्प्लॉय की लाइफ में जहाँ फैमिली इश्यूज भी हो सकता है, जब वर्क रिलेटेड इशू भी हो सकता है, बट उसका जो सुपरवाइजर है उसको सुनने के लिए ही नहीं रेडी है, वो उसको सुनता ही नहीं है। अगर उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है वहां पे, तो वो वहां पे हैप्पीली काम नहीं कर सकता एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो सुपरवाइजर है, ही शुड बी सपोर्टिव। So the role of supervisor in providing support is crucial to success of work life balance. अगर हम यहाँ पे बात करें ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट की, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट में उनका सुपरवाइजर भी सपोर्टिव होना चाहिए, एज वेल एज उनकी फैमिली सपोर्ट भी उनके साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पर्सनल लाइफ, and a supportive supervisor can significantly impact on individual ability to achieve and maintain this balance. So there are some of the key aspect of how supervisor support contribute to the work life balance success. So फर्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। अगर आपका सुपरवाइजर जो है आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर आपको घर से कोई इमरजेंसी आ जाती है और आप अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करते हो कि मुझे घर से कोई इमरजेंसी आ रही है, तो वो आपको अलो करता है कि ठीक है, तो 2 घंटे के लिए चले जाओ आप अपने घर काम करने के लिए, जो कुछ भी इमरजेंसी है। तो यहाँ पे क्या है, सुपरवाइजर की सपोर्ट है, तो वो एम्प्लॉय कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील करेगा, कनेक्टेड फील करेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सुपरवाइजर के साथ कनेक्टेड फील करेगा, उसकी सुनेगा। अगर कोई भी वो टारगेट उसको दे रहा है कि ये टारगेट है, ये हफ्ते में कंप्लीट होना चाहिए, इतना टारगेट है, तो वो कंप्लीट करेगा उस चीज को, बिकॉज वो इमोशनली वहां पे उसके साथ कनेक्टेड फील कर रहा है। तो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट कैन हेल्प the employees to bring the balance between their work and family life. So, supervisor may offer options such as telecommunicating, flexible working hours, or compressed work weeks, allowing employees to better manage their personal as well as professional commitments. क्लियर कम्युनिकेशन, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि फैमिली में भी अगर क्लियर कम्युनिकेशन है और ऑर्गेनाइजेशन भी अगर क्लियरली ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कम्युनिकेट करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को, तो वो अच्छे से काम करेंगे। इसी तरीके से अगर जो सुपरवाइजर है वो क्लियरली उनको कम्युनिकेट करता है कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे, क्या आपकी गाइडलाइंस क्या है, नॉर्म्स क्या है, जिसको आपकी पाथ क्या है जिसके ऊपर आपने काम करना है, आपकी डेडलाइंस क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इम्प्लॉयज डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे अगर वहां पे क्लियरली उनको कम्युनिकेट किया हो। तो यहाँ पे सपोर्टिव सुपरवाइजर जो उनको क्लियरली कम्युनिकेट करे, उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस बताए, उनका ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन करे, तो वहां पे वो एक तरीके से उनको बैलेंस क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। सो यहाँ पे उनका अल्टीमेटली स्ट्रेस रिड्यूस होगा, वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट जो है वो भी डिक्रीज होगा, और जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो एनहांस होगा। Next one is recognition of personal boundaries. So supportive supervisor respect and recognize the personal boundaries of their team members. So अगर कोई सुपरवाइजर है, अगर किसी एम्प्लॉय की छुट्टी है, तो वो अपने सुपरवाइजर उसका देखे कि हाँ उसकी छुट्टी है, तो उसको डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई ज्यादा ही इमरजेंसी है, तो उसको कॉल वगैरह करके बोल सकते हैं, बट मोस्टली सुपरवाइजर अगर सपोर्टिव होगा तो वो वहां पे ट्राई करेगा कि किसी और एम्प्लॉय से काम करवा ले। क्लियर। सो यहाँ पे जो भी पर्सनल बाउंड्रीज है, जो भी फैमिली है, उसको अंडरस्टैंड करे कि उसकी अपना पर्सनल स्पेस भी होना चाहिए उसके एम्प्लॉयज का। तो यहाँ पे ये भी चीज हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज एनकरेजमेंट ऑफ टाइम ऑफ।
जो सुपरवाइजर है वो ऐसा होना चाहिए, वो इनकरेज करे वेकेशन टाइम को, कि आप छुट्टियों पे जा सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, अपनी फैमिली के साथ कहीं जा सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उनको बोले कि छुट्टी भी नहीं देंगे हम आपको, ऐसी चीजें। तो वो सुपरवाइजर ऐसा होना चाहिए कि सपोर्टिव हो। अगर उसको इमरजेंसी में भी छुट्टी चाहिए तो वो हेड के साथ बात करे, जो भी चीफ होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, डायरेक्टर होगा, उसके साथ कम्युनिकेट करे कि ऐसे ऐसे हमारे अंडर जो काम कर रहे हैं उनको इमरजेंसी है या छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पे encouragement of time off भी सुपरवाइजर एक तरीके से यूज कर सकता है फॉर गेनिंग द इंटरेस्ट ऑफ देयर एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉयज अगर सेटिस्फाइड हैं उनके सुपरवाइजर से, तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, आगे अपना काम कर सकते हैं हैप्पीली और विदाउट एनी स्ट्रेस। तो वो अल्टीमेटली उनका बैलेंस क्रिएट करेगा, इक्विलिब्रियम उनकी वर्क लाइफ में और जो फैमिली लाइफ है उसमें। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो जो भी उनका सुपरवाइजर है वो अवेयर होना चाहिए कि उनके स्ट्रेस लेवल कितना है। उसकी टीम में अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है तो उसको क्लियरली कम्युनिकेट करे, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, वहां पे उनकी वर्कशॉप्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, कि अगर कोई सुपरवाइजर सपोर्टिव है, सपोर्ट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सो ऑफरिंग मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, organizing stress relief activities, and providing training on stress management is also helpful. Empathy and understanding. The supportive supervisor demonstrate empathy and understanding towards the personal challenges and commitment of their team members. This can create a positive work environment where employees feel valued and understood. अगर उनका सुपरवाइजर है, जो उनका हेड है, उनकी पेन ले रहा है, उनके जो टीम मेंबर्स है उनको अप्रिशिएशन की जा रही है, वहां पे अंडरस्टैंड किया जा रहा है उनके इमोशंस क्या है, वो कैसे एक चीज को फील करते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, तो वो अल्टीमेटली उनको क्या करेगा, हेल्प करेगा उनके अच्छे रिलेशन के लिए। प्रमोटिंग वर्क लाइफ बैलेंस कल्चर, तो सुपरवाइजर ऐसा होना चाहिए, ऐसी स्ट्रेटजीज यूज कर सकता है, जैसे ऐसा कल्चर डेवलप करे ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे वो क्या करे कि उनको प्रमोट करे, उनको नॉलेज दे कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी पॉलिसीज लेके आए जिसमें हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस रेगुलेशंस होनी चाहिए, प्रमोट करे। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, उनकी एक साइकोलॉजिकली वेलबींग के लिए भी बेटरमेंट है और फिजिकल वेलबींग के लिए भी ठीक है। Training and education. So providing proper training and education on time management, prioritization, and other relevant skills can empower employees to better balance their professional as well as personal life. तो supervisor can facilitate or endorse such programs. तो यहाँ पे यही पॉइंट क्लियर हो रहा है कि सुपरवाइजर को ट्रेनिंग और एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, सो दैट कि वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे, एजुकेट करे, जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी हो सकता है, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन जैसे हमने पीछे पढ़ा, तो यहाँ पे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन भी हेल्प कर सकते हैं एक सुपरवाइजर को सपोर्टिव बनने में। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, एजुकेशन होगी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है, और आपकी प्रायोरिटाइजेशन, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कौन से है करने वाले, लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन से है, रिलेवेंट स्किल्स कौन सी चाहिए, अगर कोई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको लर्न करना है। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, हेल्प करेंगी एक एम्प्लॉय सुपरवाइजर के लिए कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाए। फीडबैक एंड रिकॉग्निशन। सुपरवाइजर अगर ऐसा है कि आपको फीडबैक ही नहीं दे रहा आपकी परफॉर्मेंस की, तो जो एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे से काम ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे फीडबैक एंड रिकॉग्निशन होना चाहिए, एप्रिशिएशन होनी चाहिए एम्प्लॉयज की, जो कि हेल्प करते हैं बूस्ट अप द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड रिड्यूस फीलिंग ऑफ वर्नेस अमंग द feeling of stress or burnout among the employees. Leading by example, most importantly, supervisor who model a healthy work-life balance themselves inspire their team members. तो ऐसा सुपरवाइजर होना चाहिए जो खुद एज ए एग्जाम्पल हो अपने एम्प्लॉयज के लिए। सो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करें उसको अपने सुपरवाइजर को लेके और अच्छे से काम करें। So, in conclusion, the vital role of family and supervisor support in achieving balance between family and work life cannot be overstated. As employees navigate the complexities of their professional and personal responsibilities, a supportive family environment and understanding supervisor
contribute significantly to their overall well-being. जैसे हमने स्टार्टिंग से अभी जो भी हमारा लेक्चर शुरू हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे 79% ऑफ जो एम्प्लॉयज हैं वो फील करते हैं कि जो स्ट्रेस है वो नेगेटिवली उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो फील करते हैं कि उनका जो सुपरवाइजर है, जो उनका मैनेजर है, जो उनकी हायर अथॉरिटी के ऊपर है, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर रहा है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है, कैसे उनको कम्युनिकेट करना है, तो वो इफेक्टिवली उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। तो यहाँ पे अगर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो फैमिली के रिलेट टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको अगर एक एम्प्लॉय अच्छे से निभाना चाहता है, अच्छे से उनको परफॉर्म करना चाहता है, तो वहां पे मेन इंपॉर्टेंट है सपोर्टिव फैमिली इन्वायरमेंट का होना और अंडरस्टैंडिंग सुपरवाइजर का होना, जो आपको सपोर्ट भी करे और अंडरस्टैंड भी करे, सो दैट कि ये आपकी ओवरऑल वेलबींग के ऊपर पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा और बैलेंस क्रिएट करने में भी हेल्प करेगा। सो बाय प्रमोटिंग एन एटमोस्फेयर दैट वैल्यूज बोथ फैमिली as well as work commitment, organization can create a positive impact on the quality of life for their employees. So अगर कोई पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम अच्छे से ग्रो करें, अभी कितना कंपटीशन है, ये जो कॉम्पिटिटिव एरा है इसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है सक्सीड करना मार्केट में, तो वहां पे बेसिकली सक्सीड कैसे करेंगे, जो उनके ह्यूमन रिसोर्स है अगर अच्छे से हैप्पीली काम करेंगे तभी करेंगे। तो यहाँ पे जो फैमिली और वर्क की कमिटमेंट्स हैं वो आपस में वहां पे इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, सो दैट कि उनके जो एम्प्लॉयज की क्वालिटी है, जो भी क्वालिटी ऑफ वर्क है वो अपलिफ्ट हो सके। Recognition the importance of this balance not only enhance job satisfaction but also boost productivity and loyalty among the employees. So अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करें तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो भी बैलेंस है, वर्क लाइफ बैलेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, सो दैट वो एम्प्लॉयज में भी इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बता सके कि ये कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उनके लिए और एज वेल एज एम्प्लॉयज के लिए। सो इसको एनहांस अगर करेंगे तो वहां पे जॉब सेटिस्फेक्शन होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उनकी लॉयलिटी इंक्रीज होगी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, कमिटमेंट इंक्रीज होगी, उनकी करियर कॉलिंग होगी। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, पॉजिटिवली अल्टीमेट इम्पैक्ट करेंगी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। So as we move forward, it is crucial for the workplaces to continue supporting a culture that prioritize the needs of employees, acknowledging that a supportive network both at home as well as at the work is fundamental for the fulfilling and balanced life. So these all aspects should be clearly communicated among the employees, and the organization should take care of the both aspect, that both domains, एक भी डोमेन के ऊपर, मतलब दोनों के डोमेन के ऊपर फोकस होना चाहिए, एज वेल एज वर्क डोमेन एज वेल एज फैमिली डोमेन। There are some references. Thank you so much for listening. Hello, sir. Good evening. Namaste, sir. Madam, it was a very useful presentation. I liked it. But one question is, maybe in some of the private companies and all, if the employees are like overtime if they work, na, so how they will be able to manage, how they will be able to balance the work and also their personal life?
Ma'am, as I explained that there is the family support aspect. If the family is supportive, then they can manage. Or if we are talking about the overtime, that may be because of their financial reasons that they are doing overtime work. But if there is a support of their family, then they can manage easily their work and family life. Oh, okay. Thank you. Thank you. हेलो, नमस्ते मैडम, नमस्ते सर, और आप सभी को नए साल की अग्रिम में ढेरों शुभकामनाएं। मैडम, मेरा सवाल ये है कि एक सुपरवाइजर या एक मैनेजर किसी भी कंपनी में दो तरह के वर्कर होते हैं, एक डेली वेजिस होता है और एक परमानेंट रहता है। तो अगर डेली वेजिस रहता है तो वो हफ्ते के अनुसार काम के अनुसार रखे जाते हैं। तो अगर उस डेली वेजिस के घर में कुछ समस्या होती है तो सुपरवाइजर को उसे किस तरीके से कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए? सर देखो, देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे अगर डेली बेसिस की आप बात कर रहे हो, परमानेंट बेसिस की बात कर रहे हो, सैलरी तो उनको दी जा रही है बट उनसे काम भी तो लिया जा रहा है ना। तो सुपरवाइजर को चाहिए कि वो उनके साथ अच्छे से बिहेव करे। अगर उनकी कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो उनको हायर अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करे, यही एक सोल्यूशन हो सकता है। अगर सुपरवाइजर ही डिस्क्रिमिनेट करेगा, भेदभाव करेगा परमानेंट और दूसरे डेली बेसिस के ऊपर, तो यहाँ पे अच्छे से मैनेजमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो उस सुपरवाइजर को चाहिए कि वो अच्छे से उनको सुने, उनके साथ कम्युनिकेट करे। और जो हायर अथॉरिटीज है, अगर वो खुद नहीं कर सकता कुछ, उनके जो भी आप जैसे बोल रहे हो कि उनको छुट्टी चाहिए, उसमें कुछ खुद नहीं कर सकता, तो वो हायर अथॉरिटीज को कम्युनिकेट कर सकता है, बता सकता है कि ये ऐसा इशू आ रहा है। क्योंकि वो भी तो एज एम्प्लॉयज ही हैं एक तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के, और एज ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए इस चीजों के बारे में। और ताकि अगर हाँ मैं जी, हाँ जी। हाँ, अगर मैडम उसको जैसे हफ्ते में होता है कि 2 दिन बुलाते हैं, 2 दिन छोड़ देते हैं, तो अगर वो बाहर से मदद मांगे, क्या सुपरवाइजर को उसके लिए मतलब कुछ कदम उठाने चाहिए? सॉरी सर, बाहर से मदद मांगे मतलब मैं समझ नहीं पा रही नहीं, आप। ये ऐसा रहता है डेलीवेजिस का कि आज कंपनी में काम है तो उनको बुला लिया जाता है और फिर कल काम नहीं तो उनको बोल दिया जाता है कि कल आप लोगों को आना नहीं। हाँ जी तो सर। बीच बीच में आते हैं, फिर चले जाते हैं, बीच में आते हैं, चले जाते हैं, ऐसे। तो आप कौन से इशू की बात कर रहे हो कि पर्टिकुलरली जो डेली बेसिस के ऊपर एम्प्लॉयज काम करते हैं, आप फैमिली उनके इशू के बाद अगर कोई फैमिली फैमिली इशू? इशू हो जाता है तो ओके। उसकी फैमिली के अंदर कोई समस्या आ जाती है तो सो सर, जो एम्प्लॉय सुपरवाइजर है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको हैंडल करेगा। बट मेरे अकॉर्डिंग सुपरवाइजर को अगर ऐसे लगता है कि पर्टिकुलरली, अगर जैसे आप बोल रहे हो कि हफ्ते में 2 दिन बुलाया जाता है, हफ्ते में 3 दिन बुलाया जाता है, बट उसमें उसको इशू आ रहा है, तो वो ऐसे कर सकते हैं कि उसको कंपनसेट कर सकते हैं, किसी और दिन बुला सकते हैं जिस दिन उसकी छुट्टी हो, वो कवर अप हो जाएगा उसका। और अगर कुछ ज्यादा इशू आ रहा है तो वो उसको हायर अथॉरिटीज के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो उनको सुनना चाहिए और उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए कि अगर वो 2 दिन आ रहे हैं, उसके बीच में भी उनको कोई इशू आ रहा है, हेल्थ इशू आ रहा है, ऑन द स्पॉट वर्किंग
जो ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हुए जैसे उनको कोई हेल्थ का इशू आ रहा है तो वो वहां पे उनको प्रॉपर सपोर्ट करें, क्योंकि वो एज अ वर्किंग एम्प्लॉयज हैं उनके उस टाइम पे 2 दिन में भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका जो आपने जानकारी दी साझा की उसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Thank you for this amazing opportunity. थैंक यू ज्योति दीदी। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। ज्योति दीदी हमारी आवाज जा रही है? Yes, sir. Yes. ज्योति दीदी, आपने सचमुच में एक नया एक मैं जो विषय था बेदकर सर का, वो मैं जो विषय देखा तो बड़ा ही एक अजीब लगा कि आज एक नया टॉपिक के साथ मैं जुड़ रहा हूँ। और ज्योति दीदी आपने इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन को आपने दिया है ना, एक एक शब्द को आपने जो बताया, मैं उस विषय से संबंधित तो स्टूडेंट नहीं हूँ, मगर कोई भी विषय जो होता है हमारे जीवन शैली से ही जुड़ा हुआ होता है। मगर आपने जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप हमें जो मार्गदर्शन किया, आपने जो मुझे बताया नए साल के वो भी अंतिम में, ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगा कि कम से कम एक नया टॉपिक के साथ बेदकर सर ने आज नए समय में भी, सर का प्रत्येक दिन का कार्यक्रम 8 बजे होता है, मगर आज सर ने 6 बजे जोड़ा। और ये इस समय लोग 1 घंटा बैठकर लोग चाय में आपसे जब जितना देर आपका सुन रहा था उतना देर में चाय का भी चुस्की ले रहा था, मित्र के साथ ईयरफोन भी लगाए हुए था। उतना देर में मैं सफर करते करते चला है। किसी ने पूछा भी कि क्या सुन रहे हो, उसे तो समझ में नहीं आया, मगर मैं जो समझ पाया आपका जो प्रेजेंटेशन यूट्यूब पर देख रहा था कि नहीं, ये आपने आज एक नया टॉपिक के साथ जो बताया। और बेदकर सर आप बहुत अच्छा लगता है बेदकर सर का एक चीज की नए नए लोगों को वो जोड़ते हैं और वो किसी को भी नहीं रोके हैं। यहाँ तक कि हम लोग को भी कहते रहते हैं कि आप लोग भी अगर आप किसी विषय के साथ आना चाहो तो आ सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म प्रत्येक दिन के लिए ये खोल रखे हैं, ये सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, और खासकर यूथ के लिए ज्योति दीदी, क्योंकि हम लोग यूथ में ही आते हैं। और मैं चाहता हूँ कि युवा डॉक्यूमेंट्री तैयार करे, हर तरह का किसी अब जो उसका विषय है उसके साथ डॉक्यूमेंट्री तैयार करके आए और बेदकर सर से संपर्क करे। वो अपने चैनल पे जो इस तरह का जो कंटेंट को जो अपडेट करते हैं, मुझे लगता है एक इतिहास रचने का सर काम कर रहे हैं। तो
इसीलिए सर ज्योति दीदी आपको पहले तो नए साल की शुभकामनाएं। और मुझे अच्छा लगा कि नए वर्ष में एक नई बहन के रूप में आप मुझे मिली, एक मार्गदर्शन भी मिला। और बेदकर सर तो मेरे गार्जियन तो हैं, और आगे भी आपका कोई भी एक प्रेजेंटेशन हो तो सर को अवगत करवाएं, क्योंकि आपका बताने का जो शैली था बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। आपने एक नए नए चीजों को आपने बताया। धन्यवाद। थँक यू सो मच बेटकर सर, नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा ज्योति मैम। आपको भी नया साल मुबारक हो। बहुत अच्छा हुआ सेशन, सुना मैंने, बहुत अच्छा। थँक यू थैंक यू थँक यू सो हैप्पी मच न्यू ईयर मैम। मैडम। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेल इन एडवांस। बेदकर सर को तो जितना बोलो उतना कम है सर। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी ज्यादा नॉलेज दे रहे हैं ना सबको, तो वो तो Actually. बहुत एक्सीलेंट जॉब कर रहे हैं। सल्यूट सर आपको। हैप्पी न्यू थैंक यू ईयर सो मच। सबसे बड़ी बात है बेदकर सर कि अगर आप कार्यक्रम प्रत्येक दिन करवाते हैं, मुझे तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके साथ जो भी जुड़े, मेरा मानना है 10 लोग ही जुड़े मगर दिल से जुड़े और कुछ सीख कर जाए, क्योंकि यहाँ हैप्पी न्यू ईयर मैडम और बेटकर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू। हेलो, नमस्ते बेटकर सर। बेटकर सर, 3 शतक पूरे करने के लिए आपको ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, और ये कार्यक्रम ऐसे आगे चलता रहे। आपको फिर आगे के लिए शुभकामनाएं सर। जी 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 सर। और इस तरह का जब होता है तो बेदकर सर का मैं देखता हूँ तो दीदी बहुत अच्छा लगता है, और इस तरह का कार्यक्रम होने से बहुत सारी जानकारियां मिलती है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये ऐसे कार्यक्रमों से अगर 2 लोग भी अगर सीखकर निकलते हैं तो शायद बेहतर ही हो पाएगा। और जो कार्यक्रम है सर आप देश हित में करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। मैं जब सीरीज देखता हूँ तो सारा सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई एक टॉपिक ऐसा नहीं जो हमारे जीवन शैली से जुड़ा हुआ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि सर आपने 2023 के अंतिम महीना का दिन है, और जो आपने किया है सर मैं क्या कहूँ। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जयवीर सर का भी, जो जयवीर सर का भी कभी सवाल सुना हूँ। बड़ी सर ने बहुत ही अच्छी विषय पे जो भी विषय होता है उससे संबंधित जो सवाल करते हैं उनसे भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसलिए जयवीर सर को भी हमसे उम्र में भी बड़े हैं और वो हमारे गार्जियन तुल्य भी हैं। मैं उन्हें चरण स्पर्श भी कहूंगा, और दूसरी चीज की उन्हें भी नव वर्ष की शुभकामनाएं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। सोनू जी, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद जयवीर सर।